different subjects using different verbs on different objects. If there are two subjects in a sentence, अगर किसी फिक्रे में दो subjects हो यानी दो फाइल हों, then subject second serves two functions at the same time. तो जो फाइल नंबर 2 हमारा होता है वो बैक वक्त दो काम करता है, दो काम सर अंजाम देता है. It serves as object 1 for the subject 1 and becomes subject 2 for the object 2. Let's check the example. मैं तुम्हें या आपको बुजुर्गों का एहतराम करने की नसीहत करता हूँ. मैं तुम्हें बुजुर्गों का एहतराम करने की नसीहत करता हूँ. I advise you to respect elders. Now let's check its order of the words. I serve here as subject. Advise is the verb 1. You and the elders are two objects in this sentence. To is usually a preposition and respect is verb 2. Now check this out. I apply this verb on this object. For this subject 1, this you will serve as object 1. And at the same time, as it has to respect, it has to do something for those people, for the object second. This is our object second. Now let's check again. I apply this verb on this object. That this object shall in turn perform this action, apply this action on this object. Look at this sentence again. This subject is applying this verb on that object and this subject is applying this verb on that object. उर्दू में समझे इसको. मैं नसीहत करता हूँ. किसे? तुम्हें या आपको मैं नसीहत करता हूँ कि आप क्या करें, आप उठें और आप ये वाला वर्ब अप्लाई करें इस वाले ऑब्जेक्ट पे, यानी आप एहतराम करें किसका? बुजुर्गों का. I advise you that you should do respect the elders. कि आपको बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए. मैं तुम्हें बुजुर्गों का एहतराम करने की नसीहत करता हूँ. I think you have got that. वालिद उसे ग्रामर सीखने की नसीहत करता है. Let's check the order of the words. Father is our subject 1, advises is the verb 1 and him serves as object 1 and subject second, means it serves as an indirect object. 2 is a preposition, learn is verb second and object grammar is our object second or real object. Now father advises him to learn grammar. वालिद नसीहत करता है उसे ग्रामर सीखने की. वालिद उसे ग्रामर सीखने की नसीहत करता है. उस्ताद मुझे वक्त ज़ाया करने से मना करता है. The teacher forbids me to waste time. Order of the word चेक करते हैं. टीचर हमारा सब्जेक्ट 1 हो गया, फॉरबिड्स वर्ब फर्स्ट हो गया, मी यहाँ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मीन्स इट सर्व्स टू फंक्शंस एट द सेम टाइम. It serves as object 1 for the subject 1 and subject 2 for the object 2. To preposition है, waste verb second है, time is our object second or adverb of time. The teacher applies this verb on me. The teacher forbids me, उस्ताद मना करता है मुझे to waste time. उस्ताद मुझे वक्त ज़ाया करने से मना करता है. Similarly, वो अली को मेरी हिमायत करने से मना करना चाहते हैं. वो कोई लोग हैं, जमा का सिवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग प्लूरल प्रोनाउन. वो अली को मेरी हिमायत करने से मना करना चाहते हैं. चूंकि यहाँ पे हैं आया हुआ है तो हम वो को प्लूरल कंसीडर करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे. They is our subject. They want to forbid Ali to stand by me. Now let's check the order of the words. They serves as a subject 1. Want is verb 1.
to serves as preposition. Forbid is also verb 2. Ali is the indirect object, means object 1 and subject 2nd. To is again a preposition. Stand by is a phrasal verb, and me is object 2nd. Now let's check it again. They want to forbid Ali to stand by me. वो अली को मेरी हिमायत करने से मना करना चाहते हैं. They are applying this verb and this verb on this object, Ali. वो मना करना चाहते हैं अली को किस काम से? To stand by me, मेरी हिमायत करने से. वो मना करना चाहते हैं. The subject is applying two verbs on the same object, and the same object serves as subject second for the verb third and object second. वो मना करना चाहते हैं अली को कि अली क्या करे, कि अली मेरी हिमायत करने से बाज आ जाए. यानी वो अली को मेरी हिमायत करने से मना करना चाहते हैं. Subsequently, another sentence, मैं उसे तुम्हें पढ़ाने की गुजारिश करने का वादा करता हूँ. मैं उसे तुम्हें पढ़ाने की गुजारिश करने का वादा करता हूँ. I promise to request him to teach you. Let's check the order of the words. I serves as subject 1, promise is verb 1, to preposition, request is verb 2nd, him serves as an indirect object, means it serves two functions at the same time. It serves as an object 1 for the subject 1 and subject 2 for the object 2. To is again a preposition and teach is verb 3. Now let's check. I promise to request him. मैं उसे गुजारिश करने का वादा करता हूँ. I promise, मैं वादा करता हूँ, to request him, उसकी गुजारिश करने का या उसको गुजारिश करने का कि वो क्या करे, to teach you, ताकि वो तुम्हें पढ़ाए. मैं उसे तुम्हें पढ़ाने की गुजारिश करने का वादा करता हूँ. अगेन, वो उस बूढ़ी बेवा को मकान खाली करने पर मजबूर करते हैं. अब वो हमारा क्या हो गया उर्दू में? अगर यहाँ पे जमा का सीगा वर्ब में इस्तेमाल हो रहा है, हैं आ रहा है, तो इट मीन्स वी हैव टू टेक वो एज अ प्लूरल प्रोनाउन. दे कंपेल दैट ओल्ड विडो टू वेकेट द हाउस. दे, लेट्स चेक द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स. दे हमारा सब्जेक्ट 1 हो गया, कंपेल वर्ब 1 हो गया, दैट ओल्ड विडो इज आवर ऑब्जेक्ट 1, and at the same time it serves as object 2nd for the object 2nd. Preposition verb 2nd, and the house is our object 2nd or real object 2nd. Now let's check it again. They compel that old widow to vacate the house. वो मजबूर करते हैं उस बूढ़ी बेवा को वो मकान खाली करने पर. वो मजबूर करते हैं उस बूढ़ी बेवा को वो मकान खाली करने पर. वो उस बूढ़ी बेवा को वो मकान खाली करने पर मजबूर करते हैं. Now you have checked that whenever we have different subjects using different objects in a sentence, how can we compose their structure, how can we define their order of the words.